रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान ग्रामी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तलबा और तालिबात, हम आपके इल्म में है कि डेली कॉन्वर्सेशन की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हम आम बोल चाल के जुमलों को देखते हैं कि हम कैसे उनको कर सकते हैं। तो आइए आज के हम सबक में देखते हैं कि जब आप किसी से मिलते हैं तो मकामी जो लोग हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव स्पीकर्स हैं, वो कैसे किन तासुरात का इजहार करते हैं। आइए देखते हैं। जनरल प्रैक्टिस लेसन 7। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन पेरिस। मैं पेरिस में रहता हूँ। व्हेन इज़ योर बर्थडे? माई बर्थडे इज़ ऑन जनवरी 1st। What is your email address? आपका email address क्या है? It's lime123@gmail.com. What do you do? What's your job? आप क्या करते हैं? आपकी जॉब क्या है? I am a student. I work in a bank. I am unemployed at the moment. मैं तालिब इल्म हूँ, मैं बैंकर हूँ और मैं बेरोज़गार हूँ अभी तक। I work as a tour guide for a local tour company. मैं local tour company के लिए काम करता हूँ। What line of work are you in? आप किस शोबा में खिदमात अंजाम दे रहे हैं? I work in sales. What company do you work for? I work for an investment bank. मैं एक investment bank के लिए काम करता हूँ। What religion are you? ये शॉर्ट अंदाज में जुमले होते हैं। I am a Christian. मैं एक मसीह भाई हूँ। What is your marital status? क्या आप शादीशुदा हैं? अगर शादीशुदा हैं तो I am married, और अगर शादीशुदा नहीं हैं तो I am not married और I am single. Are you married? I am married. No, but looking for someone nice. Do you have a boyfriend or girlfriend? I have a boyfriend, girlfriend. I am not dating anyone. मैं किसी के साथ नहीं जाता। How many children do you have? I have 2 children. और अगर बच्चे नहीं हैं तो I don't have any kids or children. Do you have any siblings? क्या आपके बहन भाई हैं? I don't have any siblings. मेरे बहन भाई नहीं हैं। और अगर हैं तो I have 2 brothers and 2 sisters. Who do you live with? आप किसके साथ रहते हैं? I live with my wife and children. और I live with my parents. मैं बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ और मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। What time do you get up? आप किस वक्त उठते हैं? I usually get up at 5:30 a.m. मैं अमूमन उठता हूँ 5:30 पे सुबह। When do you do morning exercise? I often do morning exercises at 6 a.m. मैं सुबह 6 बजे अदायगी करता हूँ, नमाज के बाद एक्सरसाइज करता हूँ। What time do you have breakfast? I have breakfast at 6:30 a.m. मैं 6:30 बजे नाश्ता करता हूँ। What time do you get to bed or go to bed? I go to bed at 11 p.m. मैं शब खेजी के लिए सोने के लिए जाता हूँ 11 बजे। What's your hobby? I like football. I like reading books. I like reading. I like skating, cricket, football, or swimming. I am interested in particular in playing guitar. My hobbies are listening to music, dancing, playing tennis, and collecting coins. What is your favorite food? My favorite food is spaghetti. What's your favorite color? My favorite color is green. What's your favorite drink? My favorite drink is beer. What kinds of film do you like? I am really interested in horror movies, you can say action movies, romantic movies, or whatever. Did you like the movie? It's one of the best I have ever seen. क्या तुम्हें फिल्म पसंद आई? ये उन फिल्मों में से थी जो मेरी ज़िंदगी में बेहतरीन फिल्में मैंने देखी हैं। Where do you study?
आप कहाँ पढ़ते हैं? आई एम ए स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। What time do you go to school? I go to school at 6:40 a.m. How do you get to school? I usually take the bus. मैं अमूमी तौर पे बस में सवार होके स्कूल जाता हूँ। What is your major? My major is computer science. भाई आपका सबसे बड़ा अहम मजमून कौन सा है? तो वो कंप्यूटर साइंस है। Why do you study English? Why are you studying English? I am studying English because it is important and necessary. मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि ये अहम है, ज़रूरी है। Because I love to improve my English skills. जैसा कि आप लोग सीख रहे हैं तो आप कहेंगे because I want to improve my English. मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता हूँ। What do you want to do after you graduate? I would like to be a software engineer. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। I want to be a programmer. मैं एक प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ। How do you learn English? आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं? I took classes for 3 years. मैंने 3 साल असबाक पढ़े। I did an intensive course. मैंने एक अच्छा कोर्स किया, एक डीप स्टडी की। I have been studying myself. मैं खुद से ही मुतालिया कर रहा हूँ। I picked it up from movies and songs. I'm learning English, watching different movies of Hollywood, trying to, make myself in a routine, picking up new vocabulary, new words. In this way, I can improve my English skills. My friend taught me. How do you learn English? अगर कोई आपसे पूछे तो आप यूँ कह सकते हैं कि my friend told me English. मेरे दोस्त ने मुझे इंग्लिश सिखाई। How many languages do you speak? I can speak 2 languages. Can you speak English? क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? I can speak English myself. Yes, मैं बोल सकता हूँ। I can express myself and communicate in English. आप यूँ भी जवाब दे सकते हैं, जी मैं अपनी बात इंग्लिश में बयान कर सकता हूँ। How long have you been learning English? I have been learning English since I was 6. जब मैं 6 साल का था तब से मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ। और इस तरह से भी कह सकते हैं I have been learning English for 10 years. I have been learning English for 10 years. Which grade are you in? I am in grade 8. Which year are you in? I am in 3rd year. मैं 13वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। I am a freshman. मैं फ्रेश हूँ अभी। I am in my final year और मैं आखिरी साल में हूँ। Do you have any exams coming up? I have graduated. मैंने graduation किया है। What is your favorite subject? My favorite subject is arts. मैं arts पढ़ता हूँ। What is the weather like? How is the weather? It's raining. Oh, it's hot. Oh, it's windy. हवा चल रही है तो आप कहेंगे it's windy. और अगर सुहाना मौसम कहेंगे आप कहेंगे it is awesome. और अगर बादल छाए में आप कहेंगे it's overcast. What's temperature? It's 24 Celsius. What time is it? It's 4 o'clock. और अगर आपने कहना है साढ़े तो it is 3:30. 3:30 बजे हैं। I am sorry, I don't know. अगर आपको वक्त नहीं पता तो आप कहेंगे I am afraid, I cannot tell you, कि मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे इल्म में नहीं। I don't have watch. Let me check my phone. और आप ये भी कह सकते हैं मैं अपने फ़ोन से देख के आपको वक्त बताता हूँ। What's the date today? 17th of October. How are you? I am fine, thank you. How about you? Not too good. I will be okay. Where are you going? I am going to the store. I need to buy something. मैं दुकान पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत है। What are you going to do today? I am going shopping. आज मैं जा रहा हूँ अल फतेह, कहीं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, हाइपर स्टार और मेट्रो। Okay. What are you doing? आप क्या कर रहे हो? I am reading a book. मैं मुतालिया कर रहा हूँ। I am washing the dishes. मैं किताबें और मैं बर्तन धो रहा हूँ या धो रही हूँ। Where would you like to go? आप कहाँ जाना चाहेंगे? I would like to go to the zoo. मैं चिड़ियाघर जाना चाहूँगा। What's the matter? I'm not feeling so good.
Nothing, I am fine. मैं ठीक हूँ. Is there anything I can do to help? No, no, everything will be okay. Everything will be okay. हर चीज़ ठीक हो जाएगी. I am just thinking, मैं सोच रहा था. I was just daydreaming. It's none of your business. वो कह रहा है ये आपका काम नहीं है. So what did you do last night? Last night तुमने क्या किया? I watched TV. मैंने TV देखा. I cooked pasta and soup. मैंने पास्ता और सूप बनाया. What are you going to do tomorrow? आप क्या करेंगे? I am going to play volleyball at the beach. जी तलबा, आज हमारा ये यहाँ पर लेसन मुकम्मल हुआ. हम अपनी गुफ्तगू को कल भी जारी रखेंगे. यू नीड टू प्रैक्टिस योर लेसन्स, मेक सम अरेंजमेंट, इनवाइट सम ऑफ योर फ्रेंड्स, गो हैंग आउट विद देम समवेयर, ईट मैकडोनल्ड्स बर्गर, go to KFC together, practice English. The more you speak, the better speaker you will become. Thank you very much. Have a good day.